Good morning guys, welcome back to my channel. So it's a new day, second day in Moscow actually from the trip. So we are at the Renaissance in Moscow city. This is how it looks like. It's pretty good, right? So that is here. Right now we are going to a city tour of Moscow. We will see some places, maybe a museum or mainly sightseeing. That's it. Once we are done with that, I'll show you guys the rest of the city. I'm planning to visit the shooting range as well. I'm not too sure as of yet. So there's two options. One is the museum and one is the shooting range. We do have shooting range back in India as well. So I think I might go to the museum, but shooting sounds pretty convincing. So we'll see. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. Guys, this is our first stop. It's known as Sparrow Hills. It's also known as the viewpoint of the city. So apparently यहाँ से Moscow पूरा दिखना चाहिए. I'm quite excited because the guide that we have, he said कि यहाँ से सारे main buildings दिखेंगे आपको, पूरा city का एक spot दिखेगा, मतलब पूरा city दिखेगा. And it's a very good spot to take pictures. So I'm quite excited. I'll make sure that आपको भी दिखे और I'll try to explain कि कौन सी building क्या है as much as I can. There are some bikers at the back. Вот она, вот 100 рублей человека, одеваете каску, автомат со всех сторон делаете каску. और यहाँ पे वेदर काफ़ी अच्छा है, इतना ठंड भी नहीं है सही बताऊँ तो. कुछ भी ठंड नहीं है एक्चुअली. 9 डिग्री हो रहे हैं. 9 डिग्री इज़ नॉट अ बिग डील एट ऑल. सो मुझे फुटबॉल स्टेडियम दिख रहा है एक्चुअली, एंड विच इज़ व्हाट आई नो कि फुटबॉल स्टेडियम यहाँ पे है. नमस्ते. दे आर वेरी हम्बल टुवर्ड्स इंडियंस. यहाँ पे इंडियंस जो भी देखते हैं दे ग्रीट देम प्रॉपर्ली. अरे काफ़ी अच्छा बिहेवियर है रशियंस का ऑल टुगेदर अगर इंडियंस की तरफ बोले जाए तो. दिस इज़ क्वाइट कॉमन यार, यहाँ आपको काफ़ी जगह मिल जाएगी ऐसे स्ट्रीट. So right now what you see in front of you is known as Luzhniki Stadium. It's the football stadium built in Moscow. इस करके काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी होती है. अगर आपको याद होगा तो पुतिन हैज़ डिक्लेयर्ड कि फुटबॉल यहीं पे होगा. सेंट पीटर्सबर्ग में एक स्टेडियम है और एक मॉस्को में भी है. द वेदर लुक्स प्रीटी गुड. आई एम नॉट श्योर इफ यू आर एबल टू सी इट प्रॉपर्ली और नॉट. स्टेडियम का बैकग्राउंड ले लीजिए. थोड़ा लेकिन मुंह करा स्टेडियम कवर हो जाएगा. मेरे ठीक पीछे फुटबॉल स्टेडियम है. एम्बियंस काफ़ी अच्छा है और मेरे ठीक सामने मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी है. दोनों बहुत फेमस जगह है यहाँ पे. वहाँ पे भी जाएंगे फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाने के लिए. फ़िलहाल व्यू पॉइंट एंजॉय कर रहे हैं. एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. सामने जो आप देख रहे हैं मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी. दोनों ही एक टूरिस्ट स्पॉट है. मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी भी काफ़ी फेमस है क्योंकि इट्स वन ऑफ द मोस्ट अर्लीस्ट बिल्ट यूनिवर्सिटीज़ इन मॉस्को. 872 ईयर्स ओल्ड हो चुका है मॉस्को ऑलरेडी. सो दे सेइंग दैट जैसे हम हमेशा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं
यहाँ पे मॉस्को में दे सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ देयर सिटी, सो द मोमेंट व्हेन दे एक्चुअली स्टार्टेड इनहिबिटिंग दिस सिटी, and that has already been 872 years that they're celebrating this. It's going to be the 872nd year this year, and they celebrate in the month of September, second week of September. हर साल यहाँ पे इनका पूरी सिटी का जन्मदिन मनाया जाता है यहाँ पे. Guys, you can see the Moscow State University at the back. So ये famous बात यही है कि so it's one of the first skyscrapers in Moscow city as well. So guys, इसके अलावा यहाँ पे अभी देखने के लिए कुछ था नहीं. मैंने आपको फुटबॉल स्टेडियम दिखा दें. यहाँ से केबल कार्ट राइड भी दिखता है. यहाँ से मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी है यहाँ पे. दिस इज़ द व्यू पॉइंट ऑफ मॉस्को. अब जाएंगे हम नेक्स्ट स्टॉप पे और आपको दिखाऊंगा कि नेक्स्ट स्टॉप पे हमारे लिए क्या वेट कर रहा है. सीधे गाइस पीछे आपको द Saviour of Christ Cathedral दिख रहा होगा. I guess it's visible. Am I visible? Yes, I am. So this is the church. The name is the Christ, the Saviour. It's one of the largest churches or cathedral in Russia. In the entire Russia, it's one of the largest cathedral that you can find. So I'm standing right opposite to it. Ride just dropped us here. एक बार देख लो यार. I know it kind of looks like Golden Temple. That's exactly what came in my mind as well. Yeah, Golden Temple जैसे नहीं लग रहा, but यार पता नहीं कौन सा बना है, किसने किससे आइडियाज़ लिए. और this is just the entire artifact, what do you call that, architecture back then. But सब सुंदर है यार सिटी में. This is a different building. So we have the red light. And if you look at the back, that's the cathedral right there. Let's go, guys. यहाँ पे रोड क्रॉस करने का बड़ा सही सीन है. So exactly you follow the same rule. If there is a green light, you cross the road. Otherwise you don't. रेड लाइट पे रुको, वरना 3000 रूबल का फाइन भी है. हो जाना चाहिए यार. इंडिया में भी काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, वरना इंडिया में तो बताइए क्या चलता है. रास्ते में लोग उतरते फिर हाथ दिखाता है जैसे सब तांबा. आई नो राइट. Look at this. मौसम बहुत अच्छा है. ठंड बिल्कुल नहीं है. जैकेट ऐसे स्टाइल मारने के लिए पहन लिया, सही बताऊँ तो. नहीं ऐसा कुछ नहीं, एक्चुअली कैरी करना पड़ता इसलिए पहन ही लिया कि यार कैरी नहीं करना पड़ेगा. होता ना कुछ लोग ऐसे, कुछ लोग क्या मेरे जैसे लोग, मतलब लेज़ी लोग. तुम कुछ चीज़ें लो और फिर तुम्हें पहनने का मन नहीं हो, बट फिर भी पहनना पड़ता है क्योंकि वरना कैरी करना पड़ेगा. उससे बेटर है पहन ही लो. सो आई गेस अंदर पिक्चर्स लेना या वीडियो लेना कुछ भी अलाउड नहीं है. चलो कह रहे हैं कि आप यहाँ आए हैं और इस कैथेड्रल को देखिए. द लार्जेस्ट कैथेड्रल इन होल यूरोप, सॉरी रशिया, नॉट यूरोप. दे वांट यू टू कम हियर एंड लुक एट योरसेल्फ. यार एक बार एक्सपीरियंस करना तो बनता है. फिलहाल ये सीन है बैकग्राउंड. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Guys, in case if you're visiting Moscow city, this should be in your bucket list. It is amazing. Unfortunately वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी अंदर, तो नहीं दिखा पाया आप लोगों को. बट ट्रस्ट मी, फ़ोटो में देख के वो फीलिंग ही नहीं आती. द सीलिंग, द पेंटिंग्स, द कल्चर, यू हैव टू कम हियर एंड वॉच योरसेल्फ. खुद आओ देखो, पता चलता है कि कितना रिच कल्चर था इनका. इतनी हिस्ट्री इतनी पीछे जा रही है. यही चीज़ें बाहर देशों में मिसिंग है. जो हिस्ट्री है, जो इनका कल्चर है,
ये मिसिंग है। यहाँ पे आइए, बिल्कुल देखिए, ठीक पीछे है मेरे, और जितना सुंदर बाहर से लग रहा है उससे 3 गुना ज़्यादा अच्छा है अंदर से। प्लीज़ कम एंड विजिट दिस प्लेस, इट शुड बी वन ऑफ योर प्रायोरिटीज़ वंस यू विजिट मॉस्को सिटी। Welcome back, guys. Our next stop is at Saint Basil Cathedral, and right opposite to it you can see Kremlin. I'm right now walking in front of the Red Basil Cathedral, which is crossing the road. बहुत सुंदर है, और वेदर तो इतना अमेजिंग हो रहा है कि सारे फोटोज अच्छे आ रहे हैं। See, the best part about Russia is the clouds over here is really very photogenic. So in case अगर आप आ रहे हो तो आपके फोटोज DP का तो सीन सॉर्टेड है 1 साल के लिए एटलीस्ट। Saint Basil is right behind me, and this is Kremlin. Show you guys around. So guys, I wanted to look at something. Look at these stones. रशिया में पहले हर जगह पे यही स्टोन्स के रोड्स बनाए गए थे। 18th सेंचुरी में जितने मर्चेंट्स आए थे, इवन टिल 18th century merchants has paid taxes for these kind of stones for the roads, but then they have renovated this, so they've left these kind of stones for the roads somewhere, at least for the tourist places, just to make sure. Right behind me is Saint Basil Cathedral, and now we are walking towards Kremlin. One very important update. So right now you can see Kremlin right behind me. The reason why they used to call it Kremlin is actually a Russian word. Russian में Kremlin का मतलब है big old fort, so big fort. Although on the contrary, it's not one of the biggest fort which is built in Russia. There's another fort which is the biggest one, but the word Kremlin actually means big fort. So this is Kremlin right behind me, and this is Saint Basil Church. Look around, guys, the weather is amazing. We've got Kremlin on one side and Saint Basil Church on the other side. It couldn't get better than this. मिशन इम्पॉसिबल याद आ रहा है ना? टॉम क्रूज यहीं से तो निकला था पीछे से क्रेमलिन पास करने के लिए। इट्स अ वेरी फेमस स्पॉट, गाइस। इट वाज शोन मिशन इम्पॉसिबल एज वेल। अगर किसी ने नहीं देखा तो अभी जाके देखो, थोड़ा नॉस्टैल्जिक तो लग ही रहा है। सेम जगह यार, बड़ा अच्छा लगता है नहीं कि तुम कोई शूटिंग लोकेशन में हो, वन ऑफ द प्लेसेस वेयर स्टार्स हैज़ बीन। लुक्स गुड, राइट? गाइस, क्रेमलिन के बारे में बता दिए, थोड़ा आपको सेंट बेजिल के बारे में भी बताना चाहूँगा। सो इसका नाम सेंट बेजिल नहीं था हमेशा से। एक्चुअली दिस चर्च यूज्ड टू be called as the church of the cathedral of Virgin Mary, but after this what happened is the Ivan the Terrible, he was one of the kings back in the time, and there was this saint named Basil. That guy actually realized at some point in time in life that he can actually predict future. So what he did was कि जब उसको actually realize हुआ कि मैं यार future बता सकता हूँ, उसने अपने सारे belongings वगैरह दूसरों को ऐसे दान में देके he started living on the things that people used to give to him. So for an example, किसी ने किसी दिन कपड़े दे दिए, किसी दिन खाना दे दिया। मान लो किसी दिन कपड़े नहीं दिए तो he used to roam around naked around this place, around this particular in front of the Saint Basil Church, or back in that time it was known as the Cathedral of Virgin Mary. Then that king was supposed to come here due to some kind of reason, and that naked guy actually informed the king that you're a terrible king, that you're killing people and you're destroying cities. So there's a background story to that as well. क्या हुआ था, king की एक बहुत सुंदर पत्नी थी और 12 साल शादी के बाद वो पत्नी मर गई, तो उसके बाद ही went a little bit cuckoo.
he started ordering to kill people and he started ordering to destroy cities and things. So Saint Basil से जब उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने उसको बताया कि you're a terrible king, you should not be a king anymore, you're not fit to be a king and things like that. तो ऐसे अचानक से एक नंगा आदमी किंग को ऐसे नहीं बोल सकता ना यार कि नहीं यार तुम्हारा बहुत हो गया, तुम चले जाओ, अब नहीं खेलते हम तुम्हारे साथ. तो उसके बाद बट द फैक्ट कि सेंट बेसिल ने किंग को बहुत बार वॉर जीतने में हेल्प किया था, उसके फ्यूचर बताया था, प्रेडिक्ट किया था करेक्टली. ही यूज्ड टू रेस्पेक्ट हिम अ लॉट. सो जब सेंट बेसिल ने बोला ऐसा ऐसा है, ही टुक इट वेरी सीरियसली. ही actually tried to change a few of the things that he was doing wrong, and then when Saint Basil died, he actually came here at the burial ceremony, and उसने Saint Basil की coffin को कंधा भी दिया, और it's just 2 meters away from here. और उसके बाद से इस वर्जिन मैरी, द कैथेड्रल ऑफ वर्जिन मैरी को लोग सेंट बेसिल्स कैथेड्रल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ही वाज क्वाइट फेमस. इन हिज ऑनर दे हैव चेंज द नेम. सो दिस इज क्रेमलिन, दिस इज सेंट बेसिल कैथेड्रल. Now we're walking towards the where? I'll show you more as we go. Guys, so now we are walking towards the Red Square. So you see, the reason they call it this is because all the buildings around it is using the bricks and the architecture from around that time. Now थोड़ा सा इन्फो जो कि यूएसपी है मेरे व्लॉग चैनल का. सो यूल गेट टू नो थिंग्स बेटर व्हेन वी आर ट्रैवलिंग, क्योंकि यार कहीं भी जाते हो ना उसके बारे में जान के, दैट्स द एक्सपीरियंस दैट यू लर्न फ्रॉम थिंग्स व्हेन यू ट्रैवल. Earlier kings used to do the same. They travel, they learn about things, and they implement it here. So this is the Kremlin. The trees that you see here, it's quite typical for Russia. Most of the forests in Russia have these trees. Right behind me that you see is the Museum of Moscow, the Art Museum of Moscow. And this building right here is the first shopping mall in Russia. So it's known as GUM. It's very good from inside. Actually, we will get to see it from inside as well. The interiors are amazing. That's what I've heard. Right now we're just walking towards the History Museum of Moscow. Let's see how much we can see about this. See.